My dear students, today our topic is the surface area and volume. Surface area and volume. Before we do some exercise or some problems, we know that how we can find out the volume or curved surface area of a cube. What is a cube? It is a figure whose all sides are equal. Whose all sides are equal. If we take a cube whose all length equal to breadth equal to height, then it is called, this figure is called cube. If length is not equal to breadth, is not equal to height, then it is called cuboid. The differentiate between the cube and cuboid is when the length, breadth and height are equal, it is called cube. When length, breadth and height are not equal, then it is called a cuboid. How we can find? First, we know that what is the volume of the cube? Volume of the cube is equal to A cube. In other words, L cube. In other words, H cube. In other words, B cube. If we take a side length, we take a side A, that is equal to A. That means if the length, breadth or height are equal, then we take A as a side. A is the side of the cube. So we find the volume of the cube is equal to A cube. Curved surface area of the cube. The curved surface area of the cube, it is equal to A cube, 6A square. When we know these problems, we know the formulas of these. By these formula, we can easily find out the volume of the cube, curved surface area of the cube. CSA, curved surface area in short term. So it is equal to 6A square. देखिए, इससे पहले कि हम जब एक्सरसाइज करेंगे, जब हम कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हमें पहले इसका मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि क्यूब क्या है. क्यूब एक ऐसी फिगर है जिसके लेंथ, ब्रेडथ और हाइट बराबर है. लेकिन अगर लेंथ नहीं होगा बराबर, ब्रेडथ नहीं होगा बराबर हाइट, इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड. सो वी फाइंड, हम क्या करेंगे, अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा क्यूब, वो हम ए क्यूब लिखेंगे, या एल क्यूब या एच क्यूब या बी क्यूब, क्योंकि एल और एच और बी यहाँ इक्वल होता है. हम इसलिए ए लेते हैं, ए इज द साइड ऑफ द क्यूब. सो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 6A स्क्वायर. यानी ए का मतलब होता है एक साइड, चाहे आप लेंथ लेंगे, ब्रेडथ लेंगे या हाइट लेंगे. तो इसके बाद हमारे पास क्यूबॉइड आएगा. ये क्यूबॉइड क्या है? एक ऐसी फिगर है जिसके लेंथ, ब्रेडथ और हाइट जो है ये डिफरेंट होते हैं. अगर लेंथ, ब्रेडथ और हाइट डिफरेंट होंगे तो हम आसानी के साथ, देखिए वहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वो ए क्यूब, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है लेंथ दर भी ब्रेडथ दर भी हाइट. यहाँ क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेडथ और हाइट जो है ये डिफरेंट है, सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस एल दर बी बी प्लस पी दर बी एच प्लस एच दर बी एल. इसके पहले कि आप मुख्तलिफ एक्सरसाइज करोगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम आप या सॉल्व करोगे, आपको ये जरूरी जानना होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, 2l b प्लस bh प्लस hl.
यानी अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहोगे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये होगी मतलब क्यूबाइड का और क्यूब में ये फ़र्क है। अगर इसकी लेंथ ब्रेडथ और हाइट बराबर होगी तो इसको हम क्यूब कहते हैं। अगर लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेडथ नॉट इक्वल टू हाइट देन इट इज कॉल्ड क्यूबाइड। दिस इज देन इट इज अ क्यूबाइड। So we can here the volume of the cube is a cube. There is volume of cuboid is the length, breadth, height. So we take the another figure. This is the third figure, cylinder. Cylinder meaning you all of know that in cylinder meaning a figure. This is the cylinder. When you take the log, you already know the gas cylinder. This is the cylinder. If you will be see here, this is the radius or this is the height of the cylinder, radius of cylinder, because both two ends of this cylinder are circle figure. The two sides of the cylinder is the circle, and this is like a log. When we take the log, this is when we take the log. If we know that the volume of the cylinder, देखिए log of क्या सिलेंडर की शक्ल क्या है। मतलब घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो गोल, जो भी चीज़ गोल हो, अगर लकड़ी का वो लॉग होगा आपके पास, मतलब कोई लॉग होगा तो वो गोल, जो भी चीज़ गोल होगी या मतलब पाइप होगी वगैरह, इनको हम सिलेंडर कहते हैं। इसका वॉल्यूम कितना निकल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यानी इसमें कितनी मतलब गुंजाइश होगी। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इससे पहले कि हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है। वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर हमें एरिया ऑफ द बेस, अगर इस एरिया ऑफ द बेस निकालना होगा, अगर हम आप सब जानते हैं ये बेस है इसकी, तो बेस का यहाँ आर है, और ये बेस जो है ये सर्कल है, एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है। सर्कल का अगर एरिया हमें निकालना होगा वो भी होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेस जो सिलेंडर के बेस जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और तीसरी बात, जहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर बराबर होता है 2 पाई आर। अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर निकालना होगा तो वो होता है बराबर 2 पाई आर, यानी 2 value of the pi, you will be take the pi as it is equal to 3.14, or pi is equal to approximately 22/7. This is the approximate value of the pi. Approximately value of the pi is here. You should be use this pi, and if you know that the r, you know the h, you will be find by easy method. You can be find out the curved surface area of the cylinder. So we go on the cone. This is the fourth point. Cone. What is the cone? All of you know that this is the cone. Cone. This is a cone. Here one side is a circle and another is a cone. Like you all of know that this is you should be already know that what is this? The cone. Here first this is the radius of the cone. This is the L. Here this is the L. Cylinder height. This is the cylinder height. This is H. Sorry, this is the H. Height of the height, and this is the L. L is the cylinder height. So first of all, we know that this is the cone. If we know that we wanted to find out the volume of the cone, it is equal to 1/3 pi r h. If we know we should want it that what is the volume of this cone? It is the volume of the cone is 1/3 pi r h. If you know that r, you know that the h, you will be find out by easy method. You can find out the volume of the cone. Curved surface area of the cone is equal to pi r l. Curved surface area of the pi, this is the L.
because here it become a right angle. This is the L, this is the H, the height of cone, this is the radius. This is the radius, this is the height of the cone, this is the L, silent height. So we find curved surface area of the cone is pi r L. If the L is given here, if L is given here, R is given here, you can be find out by easy method. You can find out curved surface area of a cone. So third point is here, the silent height. Silent, how can you find out the silent height? Silent height is equal to silent height. Silent height is, how you can find that? Silent height is equal to L square equal to H square plus R square. Because when we see here, this is the right angle, ये right angle बनती है, तो ये silent height है और ये H है और ये R है, तो L square ये right angle है, तो hypotenuse square is equal to sum of the square of other part. Same here is the position, the L square is H square plus R. In other words, L is equal to under root H square plus R square. This is the silent height. We can find out by this method. So we take the sphere. The fifth and last point is here, sphere. What is the sphere? Sphere is same, any ball. You will be take ball, football, volleyball, any such thing which you like the ball, that is called the sphere. This is the sphere. How you can find out the volume of the sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Because in here, when we take the, here, this is the center, this is the radius. So we know that if we know that the radius of this sphere, we can find out the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. Surface area of the sphere. If we wanted to surface area of this surface, if we wanted to surface area of the sphere, only you will be take the ball, volleyball, football, cricket ball, whatever you like, any other ball, any ball you will be take. If you wanted to surface area of the sphere, that is equal to 4 pi r square. 4 pi r square. These are the some very important points. Number 1, cube. Number 2, cuboid. Number 3, cylinder. Number 4, cone. Number 5, sphere. How you can find out the volume of the cube? How you can find out the curved surface? If you know that these are equal to, because volume of the cube is equal to a cube, curved surface area of the cube is equal to 6a square, volume of the cuboid is L equal to L into B into H. Total surface area of a cuboid is 2 into LB plus BH plus HL. Cylinder, volume of cylinder is equal to pi r square H. Area of the base is pi r square. Curved surface area of the cylinder is 2 pi r H. So you will be find the cone, volume of the cone is 1 by 3 pi r H. Curved surface area of the cone is pi r L. Cylinder height is equal to L square equal to H square plus R square. In other words, L is equal to under root H square plus R square. Volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. Thanks. Hope you should be remember these points. Next we do some exercise. Okay.